हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ शोर। आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के करंट अफेयर्स, जो हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक इसके 5 पार्ट्स कर लिए हैं, उनमें हमने 750 प्लस एमसीक्यूज जो करंट अफेयर्स के वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देख लिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप वो भी देख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू पाथ शोर। और जो इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप टेलीग्राम में जाके पाथ शोर के ही नाम से वहाँ पे चैनल भी आप सर्च कर सकते हो। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो है, स्पार्क प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्पार्क प्रोग्राम है जो रिसेंटली न्यूज में आया था वो किससे रिलेटेड है? वो है आयुर्वेदा से रिलेटेड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड ए ड्रोन बेस्ड टीयर गैस लॉन्चर। जो ड्रोन बेस्ड टीयर गैस लॉन्चर है वो रिसेंटली डेवलप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया है। नेक्स्ट इज, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ऑनरेरी जनरल ऑफ द आर्मी। किस कंट्री ने इसे ये टाइटल दिया है? दैट इज नेपाल। नेक्स्ट इज, recently which of the following companies has announced its collaboration with BCCI for the title sponsors of all international matches, both women and men, held on the home ground and domestic cricket matches? वो कौन सी कंपनी स्पॉन्सर करने वाली है? दैट इज मास्टर कार्ड। ये ऑलरेडी स्पॉन्सर कर चुके हैं 2-3 सीरीज को। नेक्स्ट इज, who is the chairman of the recently announced national level committee for drafting of the national corporation policy document? That is Suresh Prabhu. Next is, recently Krishna Sankar Subramaniam has been appointed as the managing director and CEO of which of the following banks? किस बैंक के CEO and managing director अपॉइंट हुए? That is तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। नेक्स्ट इज, वेस्ट इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च, इट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। जो वेस्ट इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड है? दैट इज वुमेन विद स्टेम बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज, which of the following states or union territories will host the first ever mountain bicycle MTB World Cup, the UC MTB Eliminator World Cup in India? किसने होस्ट किया है? लद्दाख यूटी ने। नेक्स्ट इज, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गायडेकर इनॉग्रेटेड मंथन कॉन्फ्रेंस कम पब्लिक एक्सपो विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, दैट इज मॉर्थ। ये किसने कहाँ पे लॉन्च किया? मॉर्थ ने लॉन्च किया कहाँ पे? बेंगलुरु में। कौन? मंथन कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो। नेक्स्ट इज, recently which of the following organizations has released the World Social Protection Report 2020 and 2022 regional companion report for the Asia and the Pacific? किसने? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में। नेक्स्ट इज, recently which of the following states has announced to launch इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी? कहाँ पे? राजस्थान में ये इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट इज, लॉन्च की गई कौन? इंदिरा गांधी urban employment guarantee scheme. Next is, recently which of the following states has inaugurated the School of Excellence and Model School scheme based on Delhi Model School? वो किसने implement की? तमिलनाडु ने। Next is, which of the following has topped amongst all the ministry departments for resolving public grievances according to the grievance redressal index for the August 2022? वो कौन थी? UIDAI, that is Unique Identification Authority of इंडिया, जो आधार इशू करते हैं। नेक्स्ट इज, स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी विल बी लॉन्च्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इट इज बीइंग बिल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेवी? दैट इज प्रोजेक्ट 17 ए। प्रोजेक्ट 17 ए। नेक्स्ट इज, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्तालान्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज कर्तव्य पथ नाम रखा गया इसका। नेक्स्ट इज, HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, has partnered with which of the following companies to provide PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle? किसके साथ? Larsen and Toubro के साथ। Next is, who amongst the following has been appointed as the chairman and managing director of Shipping Corporation of India? That is Captain Binesh Kumar Tyagi. Next is, PM Shri Yojana recently launched is related which of the following? दैट इज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन? PM श्री योजना जो स्कीम है ये किससे रिलेट है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। Which of the following has become the first state in India to develop a first modified bio village in the country? कौन है? त्रिपुरा। इन्होंने क्या किया? first modified bio village in the country. Next is, which of the following states has launched the Rajiv Gandhi Rural Olympics 2022? वो कौन थी?
Rajasthan. Next is, who is the author of the recently released book The Hero of Tiger Hill, autobiography of a Paramvir, that is Captain Honorary Yoginder Singh Yadav. Next is, the Union Cabinet of India has approved a memorandum of understanding with which of the following countries on biodiversity conservation, that is नेपाल. नेपाल ने किसको दिया है ऑनरेरी जनरल मिलिट्री अवार्ड, दैट इज हमारी जो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल है मनोज पांडे जी को. नेक्स्ट इज, एग्रीन फेस्टिवल न्योआकी जोहार इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड ए न्यू फीचर सर्कल्स, किसने लॉन्च किया है, ट्विटर ने. नेक्स्ट इज, recently the World Resource Institute India has launched a geospatial platform called Energy Access Explorer in which of the following states, कहाँ पे किया गया इनॉग्रेट, असम में. नेक्स्ट इज, गैतियाना दिवारन was discovered, it belongs to which of the following species, किसके साथ बिलोंग करती है ये, क्रैब के साथ. Recently who amongst the following has launched a new online portal e-Awas for CAPF, that is Central Armed Police Force Personnel, that is श्री अमित शाह जी ने ये लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज, a contingent of soldiers from 7-8 गोरखा राइफल्स ऑफ द इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज वोट्सको, ये पार्टिसिपेट किया गया वोट्सको 2022, ये हेल्ड कहाँ पे की गई थी, रशिया में. नेक्स्ट इज, पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 2-day साइंस कॉन्क्लेव 2022 of the Science and Technology Ministry from all the states and union territories in following cities, that is अहमदाबाद में किया गया था ये. Next is, which among the following has launched the centralized portal called e-Samadan for redressal of grievances of students and staff in universities, that is University Grants Commission UGC. जो ये करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं लास्ट ईयर की है, इसीलिए इसमें सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन है. ये कंप्लीट करके हम 2023 की करंट अफेयर्स लेके आएंगे. नेक्स्ट इज, Smart Solution Challenge and Inclusive Cities Award 2022 were given initiative for the National Institute of Urban Affairs and which of the following organizations, किसने दिया है, यूनाइटेड नेशंस ने. नेक्स्ट इज, which of the following states has launched Mahila Nidhi, a loan scheme for the social and economic development of the women, that is Rajasthan. Next is, Prime Minister Shri Narendra Modi unveiled the new ensign flag of the Indian Navy in which of the following cities, कहाँ पे किया गया, कोची में. नेक्स्ट इज, National Pharmaceutical Pricing Authority celebrated its anniversary since its establishment. कितने साल हो गए इसको, 25 years लास्ट ईयर में. नेक्स्ट इज, Pulkari Festival recently seen in the news is celebrated in which of the following states in the India, that is केरल में. नेक्स्ट इज, who amongst the following has set a national record in the men's 100-meter race, वो कितने में, 10.25 seconds में कंप्लीट किया, that is अमलन बोरगोहेन. नेक्स्ट इज, recently which of the following Indian Airlines has joined World Economic Forum's Clear Skies for Tomorrow Sustainability Campaign, that is Indigo ने ये ज्वाइन किया. नेक्स्ट इज, which of the following states has announced to set up biodiversity heritage at Bujruja and Hongdong Lake, वो कहाँ पे है, असम में. नेक्स्ट इज, India won total how many medals in the under 20 World Wrestling Championship in 2020 in Sofia, बुल्गारिया. कितने मेडल जीत लिए वहाँ पे, 16 मेडल हासिल कर लिए. नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक इंडियन बैंकिंग इन इट्स रेट्रोस्पेक्टिव टू 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लॉन्च किए, डॉक्टर आशुतोष रारवरकर. नेक्स्ट इज, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, वो कौन है, जेम्स एंडरसन. नेक्स्ट इज, recently which of the following states has announced that its aerospace and defense policy 2022 to 27 has come into effect, किसने लॉन्च किए, कर्नाटका ने. नेक्स्ट इज, कीर्ति पारेख कमेटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ है रिलेटेड, गैस प्राइसिंग फार्मूला के साथ. रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित इनॉग्रेटेड द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में. Next is, President Draupadi Murmu launched the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. Its aim is to eliminate tuberculosis from the India in the following years. कब तक eliminate करेंगे TB को, 2025 तक. Next is, recently who amongst the following of India origin was named in the Home Secretary of UK, that is Sulila Braverman. Next is, recently PM Narendra Modi unveiled a 28 feet tall statue of which of the following freedom fighters under the canopy near India Gate, कौन है, नेताजी
Subhash Chandra Bose. Next is Niti Aayog and the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development of which of the following countries held the inaugural Niti BMZ dialogue. Development Corporation किसके साथ है? Germany के साथ. Next is recently the Foundational Learning Survey FLS was carried by the Union Ministry of Education with which of the following organizations? With NCRT. Next is recently forming Indian Chief of the Naval Staff Admiral Sunil Lanba was conferred the Pinget Jasa Jimelang, that is Tentera, by which of the following countries? किसने दिया? Singapore ने. Next is which of the following states has notified an order to establish a bird sanctuary, that is नंजारायण टैंक. कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है? तमिलनाडु में. इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी इसी के रिगार्डिंग था. नेक्स्ट इज रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज approved the inclusion of the Nari Korwan and the Kurivikaran communities in the list scheduled tribes at which of the following states? कहाँ पे? तमिलनाडु में. Next is which of the following states has constructed largest number of lakes under the mission Amrit Sarovar? Amrit Sarovar mission में सबसे ज़्यादा lakes किसने construct किए? That is उत्तर प्रदेश ने. Next is recently which of the following states has passed a bill to establish India's first forest university? That is Telangana. Next is which of the following countries will host 6th conference on the confidence building measures and interaction in Asia summit अक्टूबर किसने हेल्ड की थी? कजाकिस्तान में हेल्ड हुई थी. Next is a memorandum of understanding was signed between India and which of the following countries for training of diplomats? That is Madagascar. Next is recently Ministry of Youth Affairs and Supports has signed a memorandum of understanding with which of the following for the development of supports in India, pledging rupees 215 crores to the National Supports Development Fund, that is NTPC and Rural Electrification Corporation. Next is who amongst the following has appointed as the ambassador to India the states of Eritrea, that is Prakash Chand. Next is which of the following is the first disease that is being targeted for CRISPR based therapy, that is cluster regular interspaced short palindromic repeats in India, that is sickle cell anemia. Next is e-bal nidan portal recently seen the news is launched by which of the following organization? जो e-bal nidan portal है वो किसने लॉन्च किया? That is National Commission for Protection of Child Rights. Next is India won the SAFE Under-17 Championship title 2022 men's defeating the Nepal in the final. ये held कहाँ पे हुई थी? That is Sri Lanka में. Next is which of the following states government has announced to celebrate Puneet Rajkumar's birthday 17th March as Inspiration Day? किसने? कर्नाटका ने. Next is All India Official Language Conference 2022 was held in which of the following cities in India? कहाँ पे held हुई थी All India Official Language Conference? That is सूरत में. सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में, on the banks of river Tapi. Next is which of the following has released a new digital publication Bolo e-Pratik, that is Election Commission of India. Next is which of the following forces will deploy its first female camel riding squad? That is BSF Border Security Force. Next is which of the following organizations has launched the Green Finance Hub? वो किसने launch किया है? UNEP, that is United Nations Environment Program. Next is P. Pranam scheme recently seen in the news is related to which of the following? That is chemical fertilizers. कौन? P. Pranam scheme. Next is recently which of the following Indian cities was nominated as the first ever SEO tourism and cultural capital for the period of 2022-23? That is Varanasi. Next is recently Kartagya 3.0 hackathon was launched by which of the following organizations to promote speed breeding for the crop improvement? That is Indian Council of Agriculture Research. Next is recently National Logistic Policy, that is NLP, aims to reduce logistic costs. How much amount for the next 5 years as a percentage of GDP? कितना reduce करने वाले हैं? 8%. Next is Vanessa Nakate has appointed as the Goodwill Ambassador by the UNICEF. She is from which of the following countries? जो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बन गई है वो कौन है? दैट इज वेनिसा नकाते. बिलोंग कहाँ से करती है? युगांडा से. नेक्स्ट इज which of the following Indian Airlines has launched its transformation plan called Vihan AI, that is Air India. Next is the National Conference of the State Tourism Ministries 2022 was held in which of the following cities? कहाँ पे held हुई थी ये? धर्मशाला में. Next is which of the following countries will host 2349th Group 7 Summit? कौन होस्ट करने वाला है? जापान.
Next is, who amongst the following from the India has been elected as the member of governance committee for the Asia Pacific Forum and the Global Alliance National Human Rights Institution Bureau? कौन है वो? Justice अरुण कुमार मिश्रा. Next is, which of the following states celebrates the birth anniversary of E.V. Ramaswamy Prayar as a social justice day on 17th September every year? That is Tamil Nadu. Next is, recently which of the following teams has won 131st edition of Durand Cup 2022? That is Bengaluru FC. Durand Cup किससे related है? फुटबॉल से. Next is, the United States will host International Dairy Federation World Dairy Summit 2023 in which of the following cities? कहाँ पे हेल्ड हो गए? चिकागो में. Next is, Vigyan Pragriti, a popular science magazine, recently reviewed the National Raj Sabha Kriti Award at the second All Indian Raj Sabha Summelan 2022. It is related which are the following organs? किसने relate किए? That is CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research. Next is, recently which of the following countries has admitted as a permanent member of Shanghai Cooperation Organization at the Samarkand Summit 2022? कौन है वो? ईरान. Next is, the US Agency for the International Development and which of the following organizations has launched the Doordarshan and YouTube series? दूर से नमस्ते किसने लॉन्च किया? ये यूनिसेफ ने. Next is, recently Swati Parmal has been conferred with the Chevalier de Legion d'Honneur, that is Knight of the Legion of Honor, is the highest civilian award of which of the following countries? किसका highest civilian award है ये? फ्रांस का. कौन? Knight of the Legion of Honor. उनके लैंग्वेज में Chevalier de Legion d'Honneur. Next is, recently which of the following has become the third state after Bihar and Odisha in the eastern India to have the food security atlas for its rural areas? कौन है वो? झारखंड. फर्स्ट कौन है? और दो कौन है? बिहार एंड उड़ीसा. ये थर्ड बन गई है. नेक्स्ट इज, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग has become India's 76th chess ग्रैंड मास्टर? दैट इज प्रणव आनंद. बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग companies has secured its first patent for design and manufacture of its 3D printed rocket engine? That is Agnikul Cosmos. Next is, who is the author of the book Crimson Spring? Author of the book Crimson Spring कौन है? Navjeet Saran. Navjeet Saran. Next is, Vedanta Limited and Foxconn Group has announced to invest more than rupees 1.54 lakh crores to set up the semiconductor ecosystem in which of the following cities? का states कहाँ पे? गुजरात में. जिमेक्स 2022 जो है वो इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट होती है एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज, विच आर द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू जॉइन IBM क्वांटम नेटवर्क? दैट इज IIT Madras. Next is, who amongst the following will be the head expert committee which has been recently constituted by the central government to suggest ways for scaling of venture capital and private equity in investment? That is M. Damodharana. Next is, who amongst the following is the author of the recently released book Willpower, the inside story of the incredible turnaround in the India's women's hockey? That is Srujad Marjani. Next is, exercise Kakadu 2022 recently seen in the news was hosted in which of the following countries? कहाँ पे होस्ट हुई थी ये? ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट इज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हरापन कल्चर इज बीइंग डेवलप्ड एट द राखी गरी. इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कहाँ पे है ये? हरियाणा में. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम मुख्यमंत्री गौश मोबाइल चिकित्सा योजना? दैट इज छत्तीसगढ़. नेक्स्ट इज, 8 अफ्रीकन चीताज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कुनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है. कहाँ से लाई गई है? नमीबिया से. Next is, the Punjab and which of the following states union territories have joined hands in a pilot project to spray Pusa biodecomposer on 5,000 acre farmlands in Punjab? वो कौन है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी और पंजाब ने ये साइन किया. नेक्स्ट इज, which of the following states has launched a web portal CM the Hasi? That is Manipur. Next is, which of the following states union territories was declared as the India's first such Sujal Pradesh? कौन है वो? Andaman Nicobar Islands. Next is, recently which of the following states had decided to introduce no bag day rule in schools and mandatory games period at least once in a week? That is बिहार. सो आज के लेक्चर में हम 99 क्वेश्चंस हमने कर लिए करंट अफेयर्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिलता होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड हिट सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे.